Hello everyone. Greetings from Dharamshala Narayana Super Speciality Hospital. 4th of February is globally observed as World Cancer Day. And cancer, as you know, is such a dreaded disease that when the news is broken to the patient that he is suffering from cancer, his world goes upside down. The entire family becomes devastated, and along with the anxiety associated with the disease itself, there are multiple queries that run across his mind as in how to go about cancer treatment. So today we will be addressing and discussing those queries. I have with me Dr. Kanika Sharma Sood, Director and Clinical Lead of the Department of Radiation Oncology, Dharamshala Narayana Super Speciality Hospital, and I am Dr. Manisha Himthani, working as a radiation oncologist in the same department. So the theme for World Cancer Day this time is Close the Care Gap. So ma'am, what do you think, that does this care gap exist, and is it a reality even in big metropolitan cities like Delhi NCR? So I think the World Cancer Day theme this time has been very apt. We were very well aware of this care gap and people were really taking cognizance of this fact. But now we actually have put it as a theme. So I think it will highlight its importance, and at the same time it will draw attention to a lot of gaps which exist. And I agree, even in city like Delhi, there is a lot of care gap because we have a very, very diverse population. And diversity is in terms of education, in terms of access to the hospital, access by virtue of their financial status. So there's a lot of diversity, and I think it is high time that at least there are some factors which we can bridge. And I think one of the foremost important is the gap in education. So it is a duty of ours to educate the people with regards to prevention, the risk factors, as well as guiding the treatment. So as rightly said by ma'am, education, patient education is very important, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं और हम लोग कभी मोहल्ला क्लिनिक, कभी आयुर्वेदिक सेंटर अप्रोच करने लगते हैं. So I would like to tell my audience that a doctor dealing with cancer treatment is an oncologist, and there are 3 pillars of oncological treatment. So ma'am, what are these 3 pillars of treatment of cancer? So rightly said, the pillars of oncology dictates the patient's prognosis. मतलब आपका कौन इलाज कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका आउटकम कैसा रहेगा. तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई भी कैंसर पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है तो जो उसकी ट्रीटमेंट होती है वो मल्टीपल डॉक्टर्स करते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक ही डॉक्टर पूरी ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स हमारी कंट्री में जो है वो स्टेज 3 ऑनवर्ड्स आते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी रिक्वायर मल्टी मोडालिटी मैनेजमेंट. So the multiple modalities which you talked of are the different pillars. So जो लोग सर्जरी करते हैं कैंसर की उसको हम कहते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. जो लोग कीमोथेरेपी देते हैं कैंसर के लिए उनको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो रेडिएशन देते हैं ट्यूमर्स के लिए उनको हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. उसके अलावा जो बच्चों के ट्यूमर्स को डील करते हैं उनको हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. सिमिलरली जो डेडिकेटेडली कुछ ही और साइट की ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको हम एक एक्रोनिम देते हैं कि ये पर्टिकुलर साइट के कैंसर ट्रीटमेंट के योगदान में देते हैं, तो ये उसके पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट द डॉक्टर इज डिलीवरिंग, द ऑन्कोलॉजिस्ट में वेरी, and ultimately it may be a combination of these oncologists or maybe requirement of a single modality which is determined by individual tumor type. Okay, so there are 3 type of oncologists: radiation, medical and surgical. जैसे कि मैम ने बताया, तो सही परामर्श के लिए सही चिकित्सक के पास जाना बहुत ही आवश्यक है. और मैम जैसे कि आप बता रहे थे कि साइट स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमारे व्यूअर्स को. सो सी टिल फ्यू डिकेड्स बैक कोई भी जो सर्जरी स्किल्ड पर्सन होता था वो हेड एंड नेक से लेके जीआई से लेके एब्डोमेन से लेके सारी सर्जरी करते थे. बट ऑफ लेट देयर इज अ स्टडी recognition of individual fields. By individual fields I mean that people by virtue of their training or by interest to a particular organ pick up one particular organ. Like there may be people who are doing dedicated breast surgeries, they are called the breast surgeons then.
They may be just doing cancer treatment for GI cancer, then they are called GI oncosurgeons. If they are doing treatment for urological cancers, they are GI uro-oncologist. And जो गायनी के केसेस को देख रहे हैं उनको हम कहते हैं गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट. तो जिस साइट का ट्यूमर वो डील कर रहे हैं उससे सब साइट से वो डिफरेंट ऑन्कोलॉजिस्ट स्टेम आउट हुए हैं फ्रॉम अ कॉमन अम्ब्रेला ऑफ द ऑन्कोलॉजी. Similarly, I think even in our field, people select some sites कि मैं इन्हीं 2 sites के tumors को deal करूँगा. So they may become specialized in those subspecialties. So that is how there are more and more oncology names coming in the last 4-5 years. Rightly said. Very well stated by ma'am that there are different oncologists and there are different site-specific oncologists for different subsites. So, having said that, ma'am, how would the patient know that which oncologist should he go to and which oncologist would be his primary caregiver? So, I think this is a very important question because whenever somebody is diagnosed with cancer, his first thought is where to go, whom to approach. And many a times, you know, even I get calls that I know you are an oncologist, but who would deal with my case? So, it's a big question and I think it is time that we guide people how to go about their diagnostic workup. तो एक सिचुएशन है जहाँ आपको पता नहीं है कि कैंसर है एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि कैंसर है, सो यू कैन मीट एनी ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट बिकॉज ऑल ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इनफ टू डिफाइन द डायग्नोस्टिक प्रोसेस फॉर यू. वो बता सकते हैं कि ये बेसिक टेस्ट हैं जो आपको करने हैं. दूसरी सिचुएशन है जहाँ आपको पता चल चुका है कि आपको ऑलरेडी कैंसर हो गया है और साइट डिफाइन हो चुकी है एंड यू वांट टू चूज़ अ सेंटर वे यू वांट टू गेट अ ट्रीटमेंट डन. तो आपको आपकी कौन सी साइट है उस पर निर्भर करता है. अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ. सपोजिंग किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी रिमेन्स दी कॉर्नरस्टोन फॉर सक्सेस. तो फर्स्ट वुड बी अ विजिट टू अ सर्जन. अगर सर्जन ये फाइंड आउट करके दे डीम दैट इट इज़ इनऑपरेबल, वो ऑटोमेटिकली कोई क्रॉस रेफरल दे के अपने सहयोगी डॉक्टर से सलाह करके आपको अपने आप उनके सुपुर्द कर देंगे कि आपकी ट्रीटमेंट मैं नहीं, पहले ये करेंगे. बट देर आर सम साइट्स विच सर्जन्स डज नॉट एड्रेस राइट अवे, जैसे कि बेस ऑफ टंग के ट्यूमर्स हैं, वोकल कॉर्ड ट्यूमर्स हैं, जो कि डायरेक्टली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी आ सकते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना डायग्नोस्टिक इस्टेब्लिश करने के बाद ऐसे सेंटर पे जाएं जहां सबकी अवेलेबिलिटी है. वो डॉक्टर्स अपने आप आपको रेफर कर देंगे कंसर्न फ्रेटर्निटी में जहाँ की आपका ट्रीटमेंट होगा. सो availability of all modalities is more important, I think, and choosing the doctor as per the site of treatment. ओके, जैसे भिन्न भिन्न साइट्स के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के ट्यूमर के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हैं. ऑन्कोलॉजिस्ट में भी अदर और स्पेशलिटीज़ हैं जो वो इनसे डील करते हैं. तो इफ़ यू विल गो टू अ गुड ऑन्कोलॉजिकल सेटअप, अ गुड हॉस्पिटल सेटअप, योर ऑन्कोलॉजिस्ट वुड गाइड यू कि आप किसके अंडर प्राइमरी ट्रीटमेंट लोगे और किसके अंडर आपको रेफ़र करना है और आपको और कौन कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. Having said that, ma'am, what should the patient look for while choosing a hospital? In which hospital should he get his treatment done? So I think I briefly touched upon in my last statement that one should have all modalities. So by virtue of all modalities, I'm not just talking of doctors. So a successful cancer treatment requires a lot of ancillary services. First of all, you should have a very good diagnostic skill center. आपके radiology होना चाहिए जिसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ पेट स्कैन, MRIs, न्यूक्लियर स्कैन्स, ये सब हो. एंड द एबिलिटी टू डू बायोप्सीज बिकॉज देर आर मेनी ट्यूमर्स विच आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली. आपको गाइडेड किसी CT स्कैन के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा टुकड़ा लेना पड़ेगा. सो देर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड रेडियोलॉजी. सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेरी गुड लैब सर्विस. By lab service, why I mean a good lab service, when a surgeon is operating, many a times during surgeries they want to know whether how much of tissue I want to remove during this surgery. So that is determined by certain tests called frozen section. And frozen section availability for oncology is a basic norm. So all centers don't have, so one has to have a very good pathology and lab service. Then of course we talked of surgical, medical and radiation. Within these also, the centers which have high-end targeted therapies would be the centers which will deliver you state-of-art treatment. आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट आ चुकी है, टारगेटेड रेडिएशन होती है, टारगेटेड कीमो होती है. तो वो अवेलेबिलिटी अंडर वन रूफ होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपका एक ट्रीटमेंट एक सेंटर में हो रहा है, दूसरा ट्रीटमेंट किसी और सेंटर में हो रहा है. बिकॉज doctors need to communicate. If I am a radiation oncologist for somebody, I would want to talk to my surgeon, clear certain points while creating the plan for that particular patient. So that communication
opens up the doors for completeness of treatment. So that is why it is important that everything happens under one roof and your treating team is integrated in a fashion that they can talk to each other. And I think there is the importance of tumor boards. A tumor board should be a mandatory requirement where you go for a treatment. So that should be definitely there, and that covers most of the things. So as ma'am said, all facilities should be available under one roof. That would be an ideal institute for getting your cancer treatment done. And as she mentioned about the tumor board, what is a tumor board? Your hospital should regularly periodically conduct tumor board meetings, which is a meeting in which a multidisciplinary team of specialists talk about your case, they discuss your case and plan a holistic management approach for your tumor. So tumor board meetings is very crucial for your institute should conduct these meetings, and it is very crucial for your cancer care treatment. I totally agree with it, Manisha. And it is not just one-time meeting. See, when a cancer patient comes to us, there may be some changes which happen during his course of treatment. Tumor सही से shrink नहीं हो पा रहा है या कोई नया tumor आ गया. So there needs to be a further discussion time to time where treatment line may be changed with discussion of all the colleagues. See, it is very basic. जब कोई एक single doctor decision लेता है, वो अपनी limited experience, अपनी limited expertise और अपनी limited knowledge से decision लेता है. But when a pool of doctors come together, they exchange their ideas from all fields. So that the final plan which comes out after these tumor board meetings would be customized for that patient, and it will take care of all elements of oncology. Right. इसके अलावा मैम क्या स्टेज ऑफ कैंसर से फ़र्क पड़ता है कि एज एन इफ़ द पेशेंट्स कैंसर स्टेज इज़ वेरी एडवांस्ड, सो शुड ही बी ऑफर्ड केयर इन हॉस्पिटल बेस्ड सेटअप, और आर देयर एनी अदर institutes apart from his home care which can help him in providing end of life care? So thanks Manisha for bringing up a very important topic, because we always talk of patients who are cured. हम हमेशा उन मरीजों की बात करते हैं जो ठीक हो जाएंगे, जिनको ट्रीटमेंट मिलेगी, बट I think it is high time to recognize that all patients may not be cured. There may be some patients, कुछ patients अपनी advanced stage of disease के कारण से कई बार curable नहीं होते हैं, but that does not stop their story. Right. As doctors, it may stop a treatment decision for us, but the family has to live with those patients till the time the patient is. So it is also important when you're selecting a hospital that your hospital should also offer palliative care. आपके नॉन क्योरेबल पेशेंट्स की भी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को आपको कंफर्टेबल करना है, उनका पेन रिलीफ देना है, बहुत सारे एलिमेंट्स उनकी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. सो पैलिएटिव केयर सेंटर शुड ऑल्सो बी इंटीग्रल of the center where you are going for treatment. Like for us, we have a separate unit with 32-33 beds where dedicatedly palliative care is taken care of. There are dedicated palliative care consultants. So these facilities should also be thought of, because all cases may not have success stories. A comprehensive center should cover even the life beyond cancer treatment. They should have something called survivorship program. जो ठीक हो गए हैं उनको treatment related life long कुछ ना कुछ side effects हो सकते हैं, तो वो भी address करने हैं, तो उसके लिए एक survivorship program होना चाहिए. Patient कहते हैं अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे आना है नहीं आना है, so कब कब आना है, आपके follow ups कब कब होंगे, that comes as a part of survivorship program. So that should also be integrated into the comprehensive cancer center. So एक नटशेल में अगर मैं कहूँ ना, everything available under one roof is the center which would be an optimal center for cancer treatment. So everything available under one roof, it should have all the panels, whatever panel you are empaneled to, it should be near to your, it should be accessible to you, because cancer treatment is not just a 1 or 2 day process, it is a journey, and we would recommend you that you choose you choose your crew to sail through this rough waves of cancer smoothly, because it would involve your family, your doctors, your oncologist doctors, your support staff, nursing staff, your hospital. So at the end, we would like to conclude that keep calm and win against cancer. Thank you. Thank you.